Salim Khan, Salim Saab, the great Salim Saab, he was already made in the industry. Like I have heard the combined combination of Salim Javed got paid more than the actors at that Yeah, point they of came to time. a stage where Yeah, they were getting paid more than the actors in actors the film. itself. But So, see, commercialism is all about what value you bring. ठीक बात. If you're delivering, you will get that value. Of course. And that is what they fought for. उनका अभी एक डॉक्यूमेंट्री आने वाला है. Okay. We all must watch it. A brilliant documentary on Salim Javed is coming, which is called The Angry Young Man. Okay. So it kind of Of tells course, you about it- their yeah. graph of how they started, what they did, Yeah. their highs, their lows, their split, everything. So they fought for their name. Writers को कोई नाम मतलब नहीं पोस्टर होता पे है. भी नहीं डालता था और उनको मतलब क्रेडिट भी नहीं देता था चाहे कितनी भी अच्छी स्टोरी हो. और बेस किसी भी फिल्म की स्टोरी होती है तो दे स्टार्टेड फाइटिंग फॉर द बिलिंग एंड द क्रेडिट एंड द मनीज बिकॉज दे वर वेरी मीगरली पेड एंड बट दे डिलीवर्ड. Of course. उसके बाद भी मतलब आई डोंट सी दैट काइंड ऑफ नेम और consistency जो सलीम जावेद as writers brought. It has not come since then. You're absolutely right on that. But no, what I wanted to ask was, so he'd already made it in the industry. So when you guys were growing up, you still had full-fledged access to the industry. तो childhood कैसा था? मतलब ऐसा था कि मतलब बाबा उठ के जूस लाओ या कैसा था आप लोग का? So it wasn't that simple. ठीक है, like I said कि कुछ दरवाजे ज़रूर खुलते हैं अगर आपके फादर किसी प्रोफेशन में हैं, अगर आपके फादर मेडिकल में हैं या आपके फादर से लॉयर हैं तो आपको थोड़ा सा एक्सेस दूसरे लॉयर से बिकॉज तो एक्टर्स इस फैमिली में रह के ये था कि अगर हमको किसी से मिलना हो तो थोड़ा सा इजी था कि भाई मिल सकते हैं बट उसकी वजह से काम मिलना वो ज़रूरी नहीं है. अच्छा. लाइक लोगों को लगता है कि आपको अगर क्योंकि आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं तो आपको काम मिलेगा और आप इजीली करियर बन जाएगा. करियर जो है वो 25 साल का होता है. आपको एक ब्रेक शायद मिल भी जाए Then it's in लेकिन their hands. आपको अगर आज हम दोनों आज वी आर स्टिल हियर ठीक है वी हैव नॉट अचीव द सक्सेस लाइक पर से ऑफ द सुपरस्टार्स और फॉर लाइक अ ब्रदर बट वी आर वर्किंग Of वी आर course. डूइंग अदर थिंग्स वी आर बिजी डूइंग ऑल थिंग्स. कोई किसी के ऊपर फेवर नहीं करता क्योंकि इफ दे डोंट वांट यू आप किसी के बेटे हो भाई हो कजन हो कोई भी हो किसी को इंटरेस्ट नहीं बिकॉज इट्स अ कमर्शियल थिंग. तो इट्स वेरी अनफेयर टू से कि कोई चल रहा है तो इसकी वजह से चल रहा है क्योंकि वो आदमी जो वो कभी कभी खुद की नहीं चला सकता वो आपकी क्या चलाएगा. हाँ, true, सही बात. I एक agree, टाइम yeah. ऐसा आता है एक सुपरस्टार का जब उसकी 10 फिल्में फ्लॉप होती है तो वो अपना खुद का कुछ नहीं कर पाता वो आपका क्या करेगा. इट्स ऑल अबाउट everybody is on their own after some time. Everybody flies, some here but they are all on their own. So that's Okay. what it is. So it's very unfair sometimes, which I don't want to get into that debate where people say, oh आप इंडस्ट्री के हो, आप किसी के बेटे हो, No, आप of किसी course के not. It's absurd. with every Yeah. example of somebody who's made it as somebody's son and Who's not somebody's made it. or his brother, there are hundreds of examples of those sons and those brothers who have not made it in the industry. So there are enough examples. Now, Yeah. do we need to state those कि उसका क्या हुआ और उसका क्या हुआ तो it's very unfair when that whole topic starts कि अच्छा easy ऐसा नहीं है. Of course not. No, not at all required. So you guys still have made your presence and you've achieved what you have, which is wonderful to that. I mean, kudos to you guys. Abhi, now you both have two very handsome young men at home, both grown up. So when are we seeing them join? I think they both are like grooming themselves right now. Yeah. The training now, Nirvan has just finished his course from UCLA. Another 2-3 years, probably director of his choice, he will assist in Bombay. Then train for a year or so, particularly in some emotion. And fortunately, the platform that we come from, the platform that we have, and the family credit name, should get a job. Of course, I'm sure. Should Yeah, get a job, no, but he has to fend his own job. See, the thing is not necessarily about the first break. If it's a career, you're talking about a long 15, 20 year of your something that you want to choose as a profession and your livelihood, something that will put food on the table, that will buy you a house, that will buy you a car, that will take care of your family. So it's not easy.
कि एक पिक्चर चलने के बाद ज़रूरी नहीं कि आपकी दूसरी पिक्चर चले आपका करियर हो. करियर आपका 20 साल चलने Yeah, पे बनता exactly. है. Illustrious So with that, so you have to have that focus and that dedication and the patience, because you will meet failure. It's bound to happen, whether it's through your expectations or through what world conceives as what is not successful. You will have to face that, and uske liye you have to get ready, and that fortunately is what we bring to the table, that our fathers have done it. कि बेटा लगे रहो, काम करते रहो. कौन सी पिक्चर शोले बनेगी, कौन सी पिक्चर दबंग बनेगी, आपको पता नहीं है. जब हम बना रहे थे वो फिल्म, हमको नहीं पता. प्यार के तो डरना क्या, हम तो मस्ती मजाक में बना रहे थे. आज के डेट में वो पिक्चर आइकॉनिक है, क्लासिक है, उसके गाने हिट हैं. हमको नहीं पता था, हमको सिर्फ काम करना था, वो मेहनत करनी थी. वो दुनिया ने बना दिया उसको. तो आप प्लान करके ग्रेट नहीं बना सकते. आप काम करो, वो ग्रेट बन जाएगा बाय डिफॉल्ट. Okay, आप अपना काम अच्छे से So when करो, people think ना that, oh, I have to wait for a great script, oh, I have to wait for a great role. How do you know whether that a role that you do is going to get great or not? Now take for instance, I'm just saying a recent example of Bobby Deol, Ah, a 15-minute role in a Exactly. 3.5-hour film, and he's pretty much got as much recognition as the lead actor in the film. absolutely. Did he even conceive it? Did he even think about it? But उसने किया ना, हाँ. वो मिला उसको. वो कितने सालों से लगा हुआ था. What was that? आश्रम में he got done. And he's a dear friend of both of us, and we are very happy for him. But you have to keep at it. लगे रहो. वो कब कोई magical picture, कब कोई magical role हो, you don't know, and that will set you again. हाय, मैं अंकित हूँ, टाइम आउट विद अंकित वाला. अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब. ये हमें मोटिवेट करता है बेटर करने के लिए. लाइक आपकी मर्ज़ी, बट सब्सक्राइब फिर भी कर दो.